And welcome to the class. I hope all of you are doing well. You are in the best of health and spirits. I am Shriti Sharma. I have done my MBA in Finance and in English. I write CAT pretty frequently and get a great percentile in the verbal section. I have been the verbal head in multiple institutes pertaining to CAT and other management entrance tests. And I have now around 14 years of teaching experience in this field. My referral code is Sharmaji. And alright, so what's the day today? 25th. अच्छा कल भूलिएगा मत. Tomorrow is the 26th. Of course, you won't forget that tomorrow is 26th of Jan. Apart from that, apart from it being a very special day for the country, उसके अलावा कल हम एक scholarship test भी करें at 6 p.m. So don't miss that. Do write it. 60 minutes का test है. 30 questions होंगे. It would be curated by experts. There would be video solution for each question. Detailed live analysis by top educators, in-depth insights, test reports, and apart from that, the most attractive part is, if you are among the top 50 rankers, then you have a chance to win up to 100% scholarship on Plus subscription. So do give it a shot. कल भी है, फिर 6th Feb को है और 13th Feb को भी है. उसके अलावा CAT Combat भी आपको लिखना है every Sunday. All right. So let's do some vocabulary which is based on fill in the blanks right now. Let me just check if I'm audible or not. Good afternoon, Chetan. Good afternoon, Nitin. Am I audible? Which is based on... Oh, yeah. Audible, yeah. All right. चलिए तो जो भी नए वर्ड्स हैं जहाँ पे भी डाउट है मुझे ज़रूर बताइएगा. I'll of course explain the meanings of words as well. And it's all also based on context. Good afternoon, Aru. तो सीन ये है कि वर्ड्स के मीनिंग्स भी जानने हैं, उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट भी समझना है एंड देन यू आर सपोज्ड टू आंसर. ऑलराइट. Okay, so यहाँ पे देखिए. Despite the unfavorable attention brought on by some critics, the press had dash effect on the campaign overall. ठीक है. अच्छा, despite क्या बताता है? Contradiction बताता है कि हालांकि there was unfavorable attention which was brought on by some critics, the press had. तो ब्लैंक में कुछ पॉजिटिव वर्ड आएगा कुछ, बिकॉज यहाँ पे अनफेवरेबल है, डिस्पाइट आ गया है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आएगा. इट हैड सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कैंपेन ओवरऑल. ऑलराइट. क्योंकि डिस्पाइट है, अनफेवरेबल इज नेगेटिव, उसका ऑपोजिट कुछ पॉजिटिव होगा. बेनिफिशियल का मीनिंग आप सबको पता है. बेनिफिशियल इज समथिंग विच इज एडवांटेजियस, राइट? ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग. यस. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल इज व्हेन वन इज नॉट टेकिंग एनी साइड्स. ओके, रजत एंड रेशु हैव गिवन एन आंसर. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? न्यूट्रल इज नॉट टेकिंग एनी साइड्स, राइट? नॉट फेवरिंग एनीबडी, नॉट बीइंग बायस्ड, है ना? इज न्यूट्रल. Chetan has also given an answer. Inert is when one is not able to move, right? Inertia वैसे उससे related होता है because inertia is also that feeling where we don't want to move. So inert is not able to move or even not able to act. Alright. Destructive आपको पता है जो destroy करे, right? जो harmful हो, और harmful is harmful. So I think everybody can answer this, no? Good afternoon, Reshu. तो हमको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए था. यहाँ पे एक ही पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है. न्यूट्रल इज न्यूट्रल, राइट? हमको पॉजिटिव चाहिए तो द बेस्ट वर्ड इज बेनिफिशियल. करेक्ट. द आंसर इज बेनिफिशियल. परफेक्ट. अब रूट बताइए. बेन एज अ रूट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग. बेन मीन्स गुड. ऑफ कोर्स बेनिफिशियल का मतलब होता है एडवांटेजेस, जिससे कुछ अच्छा हो. बेनिफिट का मतलब आप सबको पता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनिफैक्टर? What is the meaning of beneficiary? Tell me, what is the meaning of benefactor
And what is the meaning of beneficiary? Good afternoon, Aryan. Benefit आपको पता है फायदा, beneficial पता है फायदेमंद, advantageous. What is benefactor and what is beneficiary? Yes, Chetan. Yes, Rajat. So benefactor is, like you said, good things doer. Yeah, doer of good things. Correct. Benefactor is जो भला करे. Beneficiary is जिसका भला हो. So benefactor is like आपने जो लिखा है, the giver of benefit. So one who gives the benefit, one who does charity, one who provides the benefit is the benefactor. One who does something good, one who does charity. Beneficiary is one who avails of the benefit, one who gets the benefit. जिसको फायदा हो. Of course, I mean, when you sign a check, तो कहते हैं ना जिसका आप नाम लिखते हो जिसको पैसा मिलेगा, so that person is the beneficiary. The one who is going to get the money is the beneficiary. And beneficiary account भी होता है. और अगर मान लो आप चैरिटी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और आप मंथली डोनेशन करते हो, तो आप उनके बेनिफैक्टर हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन के. यू माइट बी वन ऑफ द बेनिफैक्टर एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वुड बी योर बेनिफिशियरी. उनका फायदा हुआ. तो प्लीज राइट इट ऑल डाउन. नेक्स्ट देखिए, ऑल दो. फिर से ऑल दो आया. ऑल दो ऑल्सो कन्वेज कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे कि पिछले में डिस्पाइट आया था. अच्छा, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है. ऑफ किसके बाद आता है? इन स्पाइट के बाद. राइट. ओके, बट यहाँ पे ऑल्दो किड्स रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक फाइंडिंग्स वाज लेंदी. तो अब ब्लैंक में जो भी आएगा वो ऑपोजिट आइडिया आएगा कि हालांकि उसका रिपोर्ट जो था ऑन हर फाइंडिंग्स वाज लेंदी, लंबा था. द प्रेजेंटेशन शी हेल्ड वाज रादर लेंदी का ऑपोजिट, शॉर्ट. सो यू हैव टू गो फॉर अ वर्ड दैट्स सिमिलर टू शॉर्ट. Waiting for more answers to come. Which word do you see is similar to short? Correct. Brief. Brief मतलब छोटा. So A is your correct answer. अब आप मुझे remaining words के meanings बताइए. Yes, Aryan, Reshu, Arup, Rajat. Correct. It's A. The presentation was rather short. Brief. What is the meaning of beat? Thorough का मतलब क्या होता है? What is the meaning of mundane? उसके बाद तो straight forward है, which everybody knows the meaning of. Straight forward तो straight forward होता है, सीधा. Right. Frank. Elaborate is detailed. Thorough is, thorough भी क्या होता है? Again, detailed. Right. Mundane, yes. Mundane is boring because of repetitiveness. मंडेन बोरिंग होता है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में बोरिंग होता है? रेपिटेटिवनेस जहां पे इन्वॉल्व हो. यूजुअली इट्स यूज फॉर लाइफ एंड लाइफ रूटीन्स, उससे रिलेटेड होता है. ज्यादातर ऐसा नहीं होता है कि कोई मैंने किताब पढ़ा और मैं कहूँ मंडेन है. हाँ, लाइफ के लिए यूज होता है कि लाइफ अगर बोरिंग होने लगा, बहुत रेपिटेटिव होने लगा, तो हम यूज करते हैं मंडेन. ऑलराइट, सो इट डज मीन बोरिंग बिकॉज ऑफ रेपिटेटिवनेस. लिख लीजिएगा पूरा. ऑलराइट, बोरिंग बिकॉज ऑफ रेपिटेटिवनेस, क्योंकि रेपिटेशन बहुत हो गया है. एंड इनफैक्ट ये वर्ड आप सबको आराम से याद हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू बिकॉज ऑफ कोरोना. मेनी पीपल फील दैट लाइव्स हैव बिकम रियली मंडेन. ऑलराइट, बिकॉज बिकॉज आई मीन ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं. दैट हैज बीन सेम थिंग हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग. नो ग्रोथ इज हैपनिंग इन लाइफ मोस्टली बिकॉज ऑफ कोरोना. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो. बोरिंग बिकॉज ऑफ रेपिटेटिवनेस, नॉट न्यू, ऑर्डिनरी एंड बोरिंग. ऑलराइट, ये लिख लीजिए. फिर और भी मीनिंग होता है मंडेन का, वो भी डिस्कस करना है. ये आपका कॉमन मीनिंग है. दिस इज हाउ इट इज कॉमनली यूज्ड. ठीक है.
एक अनकॉमन मीनिंग होता है मंडेन इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ opposite of heavenly, you know, opposite of spiritual. When we talk about the physical reality or the physical world, तो भी ये शब्द यूज होता है. ये बहुत कॉमन मीनिंग नहीं है, बट ये वन ऑफ द मीनिंग्स है मंडेन का. जस्ट लेटिंग यू नो इफ यू कम अक्रॉस दिस मीनिंग समवेयर, सो यू शुड नो कि अच्छा एक और मीनिंग था इसका. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, द न्यू बिल्डिंग वाज एक्सपेंसिव. इट्स डैश. अच्छा देखिए, यहाँ पे सेमी कोलोन दिया है. ये दिख रहा है आप लोगों को सेमी कोलोन. सेमी कोलोन का मतलब क्या होता है? दैट बोथ द फ्रेजेस और क्लॉजेस, जैसे यहाँ पे पहला है द न्यू बिल्डिंग वाज एक्सपेंसिव, ये क्लॉज है. फ्रेज कह लो फॉर कन्वीनियंस. उसके बाद लिखा है इट्स फाउंडेशन अलाउड फॉर वाइडर हॉलवेज. तो दोनों जो क्लॉजेस हैं, इफ दे आर ज्वाइंड और सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलोन, यानी कि दोनों फ्रेज या क्लॉज आप जो भी कहें, उसमें सिमिलर आइडिया होगा. कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होगा, कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल एक्स्ट्रा नहीं होगा, ये नहीं कि स्पेशली कुछ अलग सा लिखा है, नहीं. बोथ ऑफ देम वुड हैव सिमिलर आइडिया. दिस इज व्हाट अ सेमीकोलोन कन्वेज व्हेन इट कम्स बिटवीन टू क्लॉजेस और टू फ्रेजेस. तो द न्यू बिल्डिंग वॉज एक्सपेंसिव, यानी काफी एरिया कवर कर रहा था, बड़ा था. इट्स डैश फाउंडेशन अलाउड फॉर वाइडर हॉलवेज, यानी कि उसका फाउंडेशन भी क्या होगा? बड़ा होगा, है ना, काफी एरिया जो कवर करे. So you need a word like that, something that covers a lot of area. Let's see what have you guys. Okay, two of you have given an answer. Three of you, four of you. All right. Okay, Rajat, Sutsi, Reshu, Aryan, Arup, Vanshita. All of you got C. Perfect. Here's the correct answer. What is the meaning of predecessor? मतलब थर्ड में हम नया शब्द तो ये सीखेंगे शायद, इफ यू डोंट नो. प्रेडिसेसर कौन होता है? प्री, PRE. प्री मतलब पहले. तो प्रेडिसेसर इज द वन दैट हैज कम बिफोर. तो एक बिल्डिंग का प्रेडिसेसर होगा उसके पहले जो बिल्डिंग आया. ऑलराइट. एक अगर आप एक कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, तो आपका प्रेडिसेसर होगा आपके पहले जो जनरल मैनेजर था. तो वन दैट comes before in order, not in terms of time. कि एक पार्टी में पहले आ गए तो वो प्रेडिसेसर नहीं होता है. इन ऑर्डर. जैसे आपके पोजीशन, लाइक सर इफ यू आर द GM, तो द प्रीवियस GM वुड बी द प्रेडिसेसर. आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं, करंट प्रिंसिपल, उसके पहले जो प्रिंसिपल थे वो उनके प्रेडिसेसर होंगे. ऑलराइट. आई होप यू आर राइटिंग दोस मीनिंग. हेलो धीरेन्द्र. All of you got the right answer. Yes, Chetan. Correct. Broad is the correct answer. Shallow का मतलब क्या होता है? Shallow का मतलब होता है not deep, right? Shallow waters मतलब जो water गहरा ना हो, that is shallow. Even a person who does not have enough depth is called a shallow person. Moving on. The famous pop singer tragically died at age 32. It was an dash event for many, for all his many fans, yeah, but it was especially hard on his most dash fans. बताइए. Okay, Vikas has given an answer here. Unthinkable का मीनिंग तो आपको पता है, जो सोचा भी ना जा सके, इतना इतना खराब हो. unthinkable. Amazing आप जानते हो. Dubious is doubtful as in something that is to be doubted, जिस पे doubt हो, that kind of doubtful. क्योंकि पता है, इफ आई सिंपली राइट डाउटफुल, तो डाउटफुल के दो मीनिंग्स होते हैं. जिस पे डाउट हो उसको भी डाउटफुल कहते हैं, और जो डाउट करे उसको भी डाउटफुल कहते हैं. पर डूबियस कौन वाला है? डूबियस इज नॉट जो डाउट करे, नो. डूबियस इज जिस पे डाउट हो. वन दैट इज डाउटेड, जिस पे डाउट हो. अपॉलिंग का मीनिंग होता है शॉकिंग. आई थिंक रेस्ट ऑफ देम यू ऑलरेडी नो द मीनिंग. अप्रिशिएटेड का मतलब होता है समथिंग दैट यू लाइक, यू प्रेज इट. अप्रिशिएट इज प्रेज. जिसकी सराहना की जाए.
तो डी तो नहीं होगा ना. द फेमस पॉप सिंगर died tragically at age 32. It was, आप ये कैसे कहोगे it was a good event for his fans? Why would they appreciate it? ठीक है. और वैसे एक तो होगा ही नहीं ना. if you love the personality, why would you like him to die? No, डी तो नहीं हो सकता है. Answer क्या है? C. Yes, it was shocking, appalling for all his many fans, but it was especially hard on his most devoted fans. सबके लिए शॉकिंग था, पर स्पेशली हार्ड किसके लिए था? जो सबसे ज्यादा डिवोटेड थे. आपको कुछ डाउट हो इसमें तो बताइएगा. इफ देयर एनी डाउट इन दिस वन. I'm moving on, but if you had a doubt in that one, you can still write it down. I'll come back to it. Heavy fans. Of course, I mean, we never say heavy fan. Okay, one more thing. वैसे तो यहाँ पे appreciated हो ही नहीं सकता because it was a tragic thing. Nobody appreciated it. But अगर सच में कोई चीज ऐसी हो, कोई इवेंट हो जो बहुत अच्छा हो, तो भी उसको हम appreciated event नहीं बुलाते हैं. तो भी हम कहेंगे, मान लीजिए कोई इवेंट हुआ, कोई एनुअल इवेंट हुआ कॉलेज में और सभी ने सराहना किया, तो भी आप ये नहीं कहोगे इट वॉज एन अप्रिशिएटेड इवेंट. नो, आप कहोगे द इवेंट वॉज मच अप्रिशिएटेड और द इवेंट वॉज अप्रिशिएटेड बाई पीपल. ऑलराइट. Okay, the next one. It is no secret that prison can be rather dash. फिर देखो सेमिकोलोन आया है, यानी कि उसके बाद भी जो है it will have similar ideas. Grim conditions and severe treatment have been known to dash even the most hardened criminals. The most hardened criminals are, the worst criminals with zero feelings. But even they have been known to dash. So give it a try. मैं मीनिंग्स देख लेती हूँ if there is anything that you might not be aware of. Cruel आपको पता है. Entertain पता है. Harsh is strict. Dishearten is discourage. और कुछ मैंने अज्यूम कर लिया पता हो, नहीं पता हो तो आप बताइए. I'll definitely discuss them. Pleasant is nice. Encourage is encourage. Awful is really bad. Satisfy पता है. Horrendous is again something which is extremely bad. Soothe is to calm someone down or to reduce somebody's pain. जैसे headache हो रहा है, मैंने balm लगाया तो it soothed the head. The balm would help to soothe the headache. और किसी इंसान को भी आप जब शांत करते हो, चुप हो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप उसको सूद कर रहे हो. तो सूद इज टू calm someone down or even to reduce someone's pain. I will wait a bit for this one so that you guys can analyze the context, try to understand what's happening and then answer. देखिए, सेमीकोलोन में सिमिलर आइडिया होता है, ठीक है. सेमीकोलोन दिया है तो जैसा मैंने कहा, तो ए नहीं होगा. क्रूअल एंड एंटरटेन, मतलब मैं पुट भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर आइडियाज. नो, cruel is very negative and entertain is positive. And entertain, so all us Indians know the meaning. We are entertained by the movies, we are entertained by cricket. So वो नहीं होगा. Harsh and disheartened they're not synonyms, but they can go in the same direction. So जब situation harsh होता है, खराब होता है, rigid होता है, strict होता है, अब बुरा होता है, तो हम discourage हो सकते हैं. तो B can be the answer. देखते हैं. C, pleasant and encourage go in the same direction, but we have to see if the ideas here are positive or not. Awful and satisfy go in different directions. Awful is something that was really bad, तो satisfy उसके साथ नहीं होगा.
Horrendous and soothe again would be like awful and satisfied. They go in opposite directions. Horrendous भी बहुत खराब होता है, soothe होता है calm down करना. तो बी या सी हो सकता है. हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिजन की. तो प्रिजन, जेल, प्लेजेंट तो नहीं होता है और वो हार्डेंड क्रिमिनल्स को एनकरेज तो नहीं करेगा. तो आंसर है आपका बी. देखिए, इट इज नो सीक्रेट. ये कोई सीक्रेट नहीं है कि प्रिजन कैन बी रादर हार्श. मतलब प्रिजन कैन बी रादर हार्श यानी कि स्ट्रिक्ट. हार्श के क्या क्या मीनिंग्स होते हैं? स्ट्रिक्ट. इट ऑल्सो मीन्स ग्लूमी. यू नो समथिंग जो बहुत सैड हो या आपको दुखी कर दे, राइट? तो इट कैन बी रादर स्ट्रिक्ट एंड ग्लूमी. और वो जो कंडीशंस होते हैं वो ग्रिम कंडीशंस, वो ग्लूमी कंडीशंस. एंड द सिवियर ट्रीटमेंट, सी सिवियर गोज विद दिस, नो हार्श. द सिवियर ट्रीटमेंट कैन इवन डिस्करेज द मोस्ट, you know, hardened criminals, the most such criminals which don't even have a heart, even they can be discouraged by prison conditions. So 5 का आंसर है B, which I see quite a few of you got. SB, Rajat, Arup, Chetan, Vikas, Arvind, not Reshu. Yes. Perfect. B, Beta. अब नेक्स्ट देखते हैं. Unlike the misleading television documentary, the biography was dash. Unlike आया है. Unlike. तो टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री क्या था? मिसलीडिंग. ब्लैंक में आएगा ऑपोजिट ऑफ मिसलीडिंग. मिसलीडिंग इज समथिंग विच इज फॉल्स. जो धोखा दे, जो झूठा हो, दैट इज मिसलीडिंग. आपको देखना है यहाँ आंसर क्या है. सारे वर्ड सिंपल हैं. इंटरेस्टिंग आपको पता है. एक्यूरेट इज, एक्यूरेट आपको पता है, करेक्ट, टू द पॉइंट. फैंटास्टिक इज ब्रिलियंट, ग्रेट, बहुत अच्छा. फोनी का मतलब होता है फेक. एंड फॉल्स का मतलब आपको पता है. सो यू कैन गिव मी द आंसर. Yes, all of you got it right. Aryan, Rajat, SB, Arup, all of you got it right. It's accurate. है ना? Misleading का opposite. एक ही word आ रहा है यहाँ. Alright. अभी थोड़ी देर में ना 2-3 क्वेश्चंस के बाद थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, तो आपको वहां पे थोड़ा राइटिंग करना पड़ेगा. 2 क्वेश्चंस के बाद एक्चुअली. Okay. The 7th one. According to clinicians, psychopaths are dash. That is, they are intentionally violent and mean. So you need a word which actually means something like this, intentionally violent and mean. क्योंकि लिखा है कि psychopaths are dash और फिर उसको एक्सप्लेन किया है यानी कि that is they are जानबूझकर violent and they are जानबूझकर mean. So what word goes with that? Okay, देखिए, going back to question number 6, यहाँ पे 6 में आंसर इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मिसलीडिंग का ऑपोजिट चाहिए. मिसलीडिंग इज जो सच ना हो, पर उसका ऑपोजिट इंटरेस्टिंग नहीं है. क्योंकि कोई भी चीज इंटरेस्टिंग हो सकती है. जो सच है वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है और जो सच नहीं है वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है ना. तो इट्स नॉट द ऑपोजिट ऑफ मिसलीडिंग. बिकॉज थिंक अबाउट इट. कभी कभी सच्ची चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं. कुछ रियलिटी शोज होते हैं जो सही में सच होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं. बट बहुत सारे मूवीज होते हैं जो सच नहीं होते हैं, फेक होते हैं. बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं जो नाम तो रियलिटी शो है बट बहुत फेक होता है, फिर भी वो इंटरेस्टिंग होता है. तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग हैज नथिंग टू डू विद ट्रू और फॉल्स, राइट? इसलिए आंसर 6 का ए नहीं होगा. कमिंग बैक टू 7, either you guys can go with if you know the meaning great, if not तो हम elimination भी यूज कर सकते हैं. Intentionally violent and mean would be a negative word और यहाँ पे sympathetic positive है, eliminated, polite positive है, infrequent neutral है, timid का मतलब होता है shy और even fearful. So definitely ये नहीं है आंसर. Answer is vicious. Yes, one of the meanings of vicious is somebody who is kind of evil. You know, somebody who is, जो यहाँ पे लिखा है, even this could be evil, cruel. Vicious can also mean cruel. ये भी एक मीनिंग होता है. Vicious word के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. अच्छा, सिंपैथेटिक आपको पता है? सिंपैथेटिक इज somebody जो जिसमें पिटी हो, दूसरों के साथ बुरा होते देखे तो उसको बुरा लगे. Infrequent is something that does not happen a lot of times. Frequent is something that happens a lot. Frequency तो आपको पता ही होगी. So if somebody says
माई रीडिंग इज इनफ्रीक्वेंट, यानी कि वो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं. यस विकास, विशेष के लिए सिनिस्टर भी एक अच्छा सिनोनिम है. सिनिस्टर इज लाइक वेरी इविल. SINISTER. That's correct. Yes, SB. A, B, and C are soft kind of words. Yeah. All right. I would say the last of the easy questions. उसके बाद जो है थोड़ा level हल्का सा high हो जाएगा. हल्का सा. The doctor takes note of any dash marks on the patient's skin because such abnormalities often indicate presence of skin cancer, such as the abnormalities. ऐसे कैसे abnormalities? तो उसके पहले जो marks की बात हो रही है, they have to be abnormal marks. The doctor takes note of any abnormal marks on the patient's skin because ऐसे abnormalities, such abnormalities often indicate the presence of skin cancer. So you have to just go with any word that conveys abnormal. Yes, perfect. SB, Rajat, Vikas, Chetan, Aryan, Arup. और we got the right answer. Abnormal के साथ क्या जाएगा? Irregular. Typical is regular, ordinary आपको पता है. Invisible is something you can't see. Invisible है तो फिर how would they make note of it? Invisible मतलब एकदम नहीं दिख रहा है, ठीक है? Common नहीं होगा. चलिए अब आते हैं थोड़े से हल्के से difficult questions पे where you have more words to learn. I'm going to read out the sentence and discuss the meanings, and then you guys have to give the answers. Alright. Also, if you know the meanings, so you can write them down as well in the chat. Okay. और अपनी notebook पे तो definitely लिखना है. The overly dash title character was the embodiment of greed. Embodiment क्या होता है? He was the perfect example. He was like perfect example of greed. As if he is greed in human form. That's embodiment. Alright. Embody का मतलब लिख लीजिए. Embodiment is your noun form. Embody is your verb. तो लिखिए embody का मतलब to present in physical or concrete form. Embody is to present in physical form या concrete form. So if somebody, if a person is embodiment of greed, यानी लालच अगर एक physical shape ले ले तो वो ये इंसान हो, यानी कि he is like the perfect example of greed. Embody का synonym लिखिए personify. Embody का synonym लिखिए personify. तो यहाँ पे embodiment could be personification. Alright, waiting for you guys to write these down. And I see some of you have given some answers also. Two of you, I think SB and Rajat Kumar have given an answer. Conventional क्या होता है? Conventional is usual. Something is conventional, that means many people go with it. It's common. Right? Conventional is common, usual, pertaining to fixed beliefs also, or pertaining to fixed principles, pertaining to accepted principles is conventional. ठीक है? लिखिए. Pertaining to, relating to, pertaining to accepted or fixed principles.
अगर आप किसी के लिए कहो कि he or she wears conventional clothes, that means they wear, the normal clothes that most of the people wear, nothing uncommon. ठीक है, लिखिएगा पूरा। हाँ, किसी किसी का सही आंसर आ रहा है, किसी का गलत आ रहा है, इससे थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। सारे वर्ड्स यहाँ पे बहुत हैं, लिखिए। दैट्स हाउ वी लर्न, राइट? एम्बॉडी सीखा, पर्सोनिफाई सीखा, कन्वेंशनल सीखा। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? अगेन, वन fixed with his or her beliefs is orthodox. Orthodox is one who has fixed beliefs, one who is not willing to change his or her beliefs. लिखिए अच्छे से। और आप लोग भी बताइए, you guys also tell me the words that you know the meaning of, वो लिखिए उसका मीनिंग चैट में। Rajat, I already saw your answer of the first one. I hope you're writing the meanings as well. आंसर सही नहीं था। Yes, SB is writing orthodox is sort of ancient. In the sense he, again, somebody who follows traditional beliefs and is not willing to change his or her beliefs. Rudhivadi. Fixed or traditional beliefs. Beliefs, beliefs, and is not flexible, not willing to change his or her beliefs, not willing to bend. जो मतलब मान लिया वही मान लिया। अब देखिए, बी देखिए, बी में covetous का मतलब होता है greedy. Acquisitive is also greedy, one who wants to simply acquire things. कि चाहिए और चाहिए, हमको और ज्यादा चाहिए। So acquisitive is also like greedy, one who no. हाँ, philanthropic आपने सही कहा विकास, in favor of mankind, yes. Acquisitive का लिख लीजिए, acquire से आया है, accusative नहीं है, ACCU नहीं है, acquisitive है। So acquisitive is जो acquire करना चाहे, और चाहिए हमको और चाहिए, यानी लालची हो, greedy हो। covetous भी greedy होता है। Alright. Gluttonous जो C में दिया है, gluttonous is also greedy, but mostly in terms of food. जनरली भी यूज होता है gluttonous for greedy, लालची, बट जो बहुत भुक्खड़ हो, जिसको खाना बहुत पसंद हो, उसको भी gluttonous कहते हैं। Alright, so I'm erasing these, assuming that अभी तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। And of course, the benefit of online teaching is you can always go back, pause it, and write it down, right? तो gluttonous का भी मतलब होता है greedy, लालची। एक ये मीनिंग होता है और दूसरा greedy in terms of food, भुक्खड़, FWD, food. Alright. B option है gregarious. Gregarious is a person who likes to socialize, uh, who likes to meet people, who is extrovert. ये होता है gregarious. Sociable लिख दे रही हूँ मैं, simple. जिसको पसंद हो socialize करना. Garrulous is literally talkative. Gregarious, of course, I mean, can come as talkative, but basically हाँ, socializing पसंद है तो ज्यादातर आप बातचीत भी ज्यादा करते हैं. So please write it down. One who loves the group. Greg as a root means group. Okay, one who likes to socialize, sociable, outgoing. All right. Avid is one who has great enthusiasm for something, great interest or enthusiasm for something in particular. एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? शशि थरूर इज एन एविड रीडर। अपने लिए लिखिए, आई एम एन एविड रीडर। इफ यू आर एन एविड रीडर दैट मीन्स यू हैव ग्रेट एंथुसियाज्म फॉर रीडिंग। ठीक है। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस,
ई ऑप्शन। अब तो मेरे लिए जगह ही नहीं बचा, मैं कहाँ लिखूं। स्टिंजी इज कंजूस, माइजरली इंग्लिश में कहते हैं, और माइजर, कंजूस आप लिख सकते हो, स्टिंजी। एंड फिलांथ्रोपिक आप सबने ऑलरेडी बताया, मेनी ऑफ यू हैव रिटन फॉर फिलांथ्रोपिक हियर। एसबी ने लिखा है, विकास ने लिखा है, यस, वन हु लव्स मैनकाइंड। फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोपो का मतलब होता है मैनकाइंड, फिलांथ्रोप इज वन हु लव्स। कल हमने फिलांथ्रोप उसमें भी किया था, प्री स्पेशल क्लास में भी किया था। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या है। नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन गिव एन आंसर। Arup, Vikas have given one answer each. What about the Rajat have given an answer? लिखा ही है कि द ओवरली डैश कैरेक्टर वॉज एम्बॉडीमेंट ऑफ ग्रीड। तो वो ओवरली क्या था, ग्रीडी ही था ना, लालची। फिर कोलोन दे के लिखा है वो इतना लालची था कि ही सोल्ड हिज डॉटर टू द हाईएस्ट बिडर। तो लालच की बात हो रही है पूरी। यस यू गाइस आर राइट, सार्थक आल्सो गॉट इट। डी इज द आंसर, डी का डी। So with this then, acquisitive. Now please check out the second one. What should be the answer? Escape का मतलब पूरा सेंटेंस आपको देखना है, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना है, एंड आई थिंक मीनिंग्स में भी काफी वर्ड्स आपको पता होंगे। एस्केप का मतलब होता है बच के भाग जाना। द प्रिजनर एस्केप्ड द प्रिजन। एस्टीम इज टू रिस्पेक्ट। एश्यू इज टू अवॉइड। स्पाई इज टू सी। स्टैब्लिश तो आपको पता ही है, टू सेट समथिंग अप। तो देख लीजिए, टेक द टाइम, a bit of it, and give me an answer. Satyam has given an answer, Arvind has given one answer, Sarthak has given one answer. Establish का मतलब होता है कोई चीज जमाना, कोई चीज सेटअप करना, like you established a company, आपने सेटअप किया है। सार्थक, विकास, एसबी और यस, आंसर है देखा उसने, एस्टैब्लिश नहीं किया, देखा। आफ्टर वॉन्डरिंग द डिजर्ट फॉर नियरली 3 days, डिजर्ट में वो भटक रहा था लगभग 3 दिन के लिए, विदाउट एनी वाटर, विदाउट साइट ऑफ वाटर, बिना उसे कोई भी पानी नहीं दिखा। बट फिर आता है आफ्टर दैट, उसके बाद ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया, टू सी एन ओसिस इन द डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि दूर पे उसने ओसिस स्टैब्लिश किया, सेटअप किया, सेटअप कैसे करेगा, इट्स अ नेचुरल वाटर बॉडी इन द डेजर्ट, राइट। So he saw it. So he was happy to see it is the answer at D. As it would mean he and his troop could drink. Right. So he was happy to see it. तो मीनिंग लिख लीजिएगा ESPY, स्पाई। भी जो हम कहते हैं स्पाई का भी मेन काम होता है नजर रखना ना, स्पाई का मेन काम तो यही होता है नजर रखना, इसीलिए बहुत बार वेश बदल के जाते हैं ऑल ऑफ दैट। तो ESPY का मतलब होता है टू सी एज अ वर्ब। ESCHEW, इज टू अवॉइड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The couple was upset by the construction of the new skyscraper across the street. Skyscrapers are very tall buildings. बहुत ऊंचे। All right. Okay. Back. Great. Okay. So I'll have to, I think, check the video. Like, which part was I? Skyscrapers are very tall buildings. बहुत ऊंचे। Okay. So basically, I was talking about skyscrapers, and then I was saying, यहाँ पे क्या लिखा है? The couple was upset by the construction of the new skyscraper
across the street as the building would dash their one scenic view. जैसा कि मैं यहाँ पे बता रही थी कि even I am able to see the mountains from my left window. But हमको भी डर लगता है कि बीच में कोई ऊंची बिल्डिंग ना आ जाए. Though it's contested land तो hopefully नहीं आएगा. Otherwise the view would be blocked. तो जो माउंटेन दिखता है that's scenic view because it's not like कि ऐसा नहीं है कि मुझे बाजू में सुंदर बिल्डिंग दिख रहा है. That would not be scenic view. Scenic view is beautiful view related to scenery, right? तो मैंने आई थिंक ये स्ट्रीमिंग होना बंद हो गया था. आई डिड मेंशन द मीनिंग ऑफ अमेलियोरेट बट आई थिंक आई मेंशन इट अगेन. अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग दैट्स बैड और इसीलिए सिचुएशन बेटर हो जाता है. ऑलराइट, so to reduce the intensity of something bad, hence इसका रिजल्ट क्या होता है? इसलिए मीनिंग में आप ये भी लिख सकते हो, to make the situation better. Alright, I saw that some of you already had written the answer for this one as well. Okay. Obstruct का मतलब क्या होता है? To create an obstacle, बीच में आना, है ना? To act as a hurdle, to act or create an obstacle. Alright, to act as an obstacle or to create an obstacle, ठीक है? Create an obstacle, रास्ते में आना. Alright, obviate का मतलब होता है to prevent something from happening, to avoid maybe, the way he was driving, an accident was imminent, but then, she was coming from the other direction and she's decided to, go on the left, and that is how she obviated an accident. So she prevented it from happening. Okay, refine is, आपको पता है जैसे refined oil भी होता है, तो किसी चीज को ज़्यादा पॉलिश करना, ज़्यादा फिल्टर करना अच्छे से, that's refining it. And plagiarize is to copy in an illegal manner. It's usually used for text. Alright. To copy a text illegally. Alright. Or a text in an illegal manner. Has it come behind the green screen? Okay, that's what plagiarize is. तो आंसर बताइए. Like I said, some of you had written the answer, but वही वो stop streaming हो गया तो comments मुझे दिख भी नहीं रहे. I think काफी लोगों ने उससे पहले भी लिखा था. Yeah, Sarthak, SB, Oritra, Rajat, Arup. Yes, the answer is B, obstruct. As it would obstruct their view. रास्ते में आ जाएगा ना, so it would act as the obstacle rather. Okay, moving on to the fourth one. Perfect. Chetan also got it. Aryan, Rajat, perfect. वो देखते हैं. Many cult leaders will go to great lengths to impress others. अब example दिया है कि क्या करते थे to impress others. For example, Jim Jones, one of the history's most infamous religious dash. अच्छा, infamous का मतलब होता है famous for the wrong reasons. Famous in a bad way. For the wrong reasons. Huh? Staged miracles to convince his retinue to continue following him. Staged miracles मतलब कि real में miracles होते नहीं थे वो. Of course, he would fake them. He would fake those miracles. So what are the meanings of the word? बताइए. 4 you're saying maybe C. All right. Because of the word pandit, I guess. Infamous लिखा है. All right, चलिए देखते हैं. Racontos are storytellers. That's what they are. Storytellers. That's what racontos are. Connoisseurs are like experts in a field. If you have very good taste in any particular field, you are an expert.
Expert. Connoisseur is an expert with refined taste. Usually, usually in art, food, drink, usually in these drinks, etc. The connoisseur is if you are a connoisseur of wine, that means you're an expert when it comes to wine and you have refined taste. You really can properly say what's good wine and what's bad wine. You can be a connoisseur in terms of music, in terms of art. All right. Pandit, आपको पता है, Pandit is an expert, not with refined taste, but you have expert knowledge in that field. Pandit भी expert होता है, but it pertains to having expert knowledge in a field. Ethicist is of course one who follows ethics. Huckster का एक मीनिंग होता है peddler, जो इधर उधर जाके चीजें बेचते हैं. But it also means scammer, one who deceives, जो धोखा दे. Right? Scammers भी होते हैं. So hucksters are also scammers, जो scam करे. Hucksters का एक मतलब peddlers भी होता है, जो इधर उधर जाके चीजें बेचते हैं. I'm saying it all. ठीक है? I'm hoping you'll write it. Don't just go with what I've written. You have to go with this. Plus, you have to also go with what I'm saying. You have to keep on taking down your notes. लिखते रहना है आपको, हाँ? तो बताइए, बेस्ट आंसर क्या है? देखो, ऑलरेडी लिखा है कि infamous. Infamous is a very negative word. So which one fits here? Huckster. Huckster fits here. Infamous है ना? So this is the best word. Pandit would be somebody genuinely with expert knowledge in a field. Alright, और लिखा है infamous है, तो best word आपका huckster हो जाता है. Yeah. Infamous is a very negative word. Yeah. Okay, we have two more questions left and then we'll be done for the day for now. The veterinarian, like an animal doctor, told us that the kitten's original owners were dash and did not give her adequate food, water or shelter. ठीक है? तो आपको context भी समझना है. So what are the meanings of these words? मतलब meanings मैं बता दूंगी, but then I'll give you time to think about them and analyze and then figure out what's the right answer. Or even without meaning, if you can, then wonderful. If you already know the meaning, let me just see it here. What have you written? Anything? Asta, the answer for the previous one was hucksters. SV is correct. All right. So scurrilous का एक meaning होता है vulgar. All right. Of course, it's also used for somebody who uses vulgar language. So scurrilous is vulgar. Doting is loving. Like a doting grandmother would be a loving grandmother. It's one who pampers her grandchildren a lot. A doting father or a doting mother would be a loving, caring parent. All right, that's doting. और बताइए, prudent अभी हाल में हमने किया है. कल ही तो किया था prudent. So tell me the meaning. What's the meaning of prudent? Okay, Rajat is saying answer should be B. Yashwant is saying कल हमने prudent किया था. What does it mean? Cautious. Yes, prudent is cautious. Very good. Positive word, है ना? Cautious, careful, है ना? That's what prudent is. And what's the meaning of remiss? Remiss is somebody who does not fulfill his or her responsibility properly. Failing to fulfill responsibility or obligations. That kind of a person is remiss. Failing to fulfill responsibility. Alright. Okay, and then the word sheer. Sheer has multiple meanings, but spelling देख लीजिए, SHEER है.
SHEAR भी एक वर्ड होता है जिसका अलग मीनिंग होता है, जो कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, शेयर करते हैं ना, शीप को शेयर करते हैं, उसका वुल हटाना, बट दैट्स अ डिफरेंट वन, वो अभी मत लिखिए, उसका स्पेलिंग अलग है, ये है SHEER. One meaning of sheer is when we talk about sheer cloth, thin and transparent. That's one meaning. PARENT. E. The way I've written it looks like A. Alright. इसका एक और मीनिंग होता है sheer का. It also means pure, complete. If I say sheer courage, pure courage, complete courage, unadulterated courage, केवल courage ही courage. Alright. Or it also means sheer cloth is very patla cloth. तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? लेट्स सी व्हाट यू गाइस हैव गॉट. हाँ, sheer happiness is like complete happiness, thorough happiness, pure happiness, unadulterated. बहुत अच्छा वर्ड है ना, sheer happiness, मतलब उस happiness में कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा भी सैडनेस नहीं है, केवल happiness ही happiness है, राइट. SHEAR शेयर का मतलब अलग होता है, हाँ, वो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया है अभी. ओके, लेट्स सी व्हाट योर आंसर्स आर. आप लोग कह रहे हैं बी. रजत, आर्यन, lacking care, correct. Astha is saying remiss. SB is saying the same. Oritra is also saying the same. Good afternoon, Nikhil. And SB, sheer stress, SHEER, sheer stress would be like complete stress, है ना? हाँ, आप सब सही बोल रहे हैं. आंसर इज बी, क्योंकि लिखा है डॉक्टर ने कहा कि किटन का जो ओरिजिनल ओनर्स थे डैश थे, क्योंकि उसके आगे लिखा है एंड दे डिड नॉट गिव हो प्रॉपर फूड, वाटर एंड शेल्टर, यानी कि वो दे डिड नॉट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो ओनर्स थे, दे वर सपोज टू डू इट बट दे डिड नॉट. प्रूडेंट हो जाता कि ख्याल रखा, राइट, हमको दिखाना है कि ख्याल नहीं रखा. आई थिंक सिक्स्थ में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंसर फिगर आउट कर लोगे. फिल्टर, स्किम, ये सब मीनिंग्स तो आप जानते हो. फिल्टर पता है, पानी फिल्टर होता है ना. यू नो दीज वर्ड्स. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है. withstand and resist have kind of the same meaning, है ना. Both of them have similar meanings. Resist or withstand is like to kind of oppose or not let something happen. To withstand pressure is to kind of oppose that pressure, and resist is also similar to it. Sieve क्या होता है? SIEVE. It's like हिंदी में कहें तो छानना, अगर आपको पता हो, as a verb, or also the tool that is used to for sieving is called a sieve. Like हिंदी में छन्नी कहते हैं उसको, sieve को. Right. So it's also in a way it's used to filter. It's used to, but it's not used for water. It's not used for liquid. It's used for solids, right? So basically, it is a device where one can with the help of which one can separate larger objects and smaller objects. छन्नी की जब हम बात करें, of course, चाय के लिए आप जो use करते हो, that's also a sieve, but that's a different kind of. That's a smaller one, right? That's more of a sieve helps in sifting. SIFTING. Okay. Peruse का मतलब लिखिए to go through something in detail. आपने अगर कभी अपना रेज्यूमे कहीं भेजा है तो यू माइट राइट इन द मेल कि अटैच्ड, प्लीज फाइंड अटैच्ड अ कॉपी ऑफ माय रेज्यूमे फॉर योर काइंड पेरूसल. तो पेरूसल का मतलब होता है, वही होता है, उसका नाउन फॉर्म होता है. पेरूस इज द वर्ब फॉर्म, पेरूसल इज द नाउन फॉर्म. टू गो थ्रू समथिंग इन डिटेल. लेट्स सी, आपने हाँ लिखा है आपने छन्नी, करेक्ट. यस. ऑफकोर्स चाय वाले को स्ट्रेनर भी कहते हैं, लाइक चाय जिससे आप छानते हो, वो छोटा वाला जो होता है, दैट्स ऑफ कोर्स दैट्स फॉर लिक्विड, इट्स अ स्ट्रेनर, राइट. और फिर जिससे आटा छानते हैं, दैट्स अ सीव, SIEVE. आई होप यू आर राइटिंग द मीनिंग ऑफ peruse. Peruse is to go through something, to go through a material in detail. You can also peruse a book, right? Okay. Oritra has given an answer that it should be A. स्कटल वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा.
इसका मैं आपको एक कॉमन वर्ब मीनिंग बताती हूँ. जो कॉमन मीनिंग है, इट मीन्स टू स्करी. स्करी का मतलब होता है टू रन और टू मूव हेस्टली, हरिडली. कैसे यूज होता है कि माइस, दे स्करी. माइस जिस तरह से, अगर आप एक रूम में जाओ और वहां पे चूहे हों, तो आप रूम में जाओगे ना, चूहे इधर उधर दौड़ने लगेंगे और वो जल्दी जल्दी दौड़ने लगेंगे, तो उनके दौड़ने को स्करी कहते हैं. द स्करीड इन ऑल डायरेक्शंस. तो उसी को स्कटल भी कहते हैं. राइट. टू मूव हेस्टली. ऑब्लिटरेट इज लाइक टू कंप्लीटली वाइप आउट. फॉर एग्जाम्पल, dinosaurs have been obliterated from the face of the earth. Alright. Obliterate is to completely wipe out, एकदम ही हटा देना. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग बताओ, Tom's memory has been obliterated. क्या मतलब है इसका, बताइए. Let's look at what do you have to say about this. Tom's memory has been obliterated. कोई कुछ लिख नहीं रहा है. वाइप्ड आउट. यस, मेमोरी फॉर्मेट. हाँ, किसी का मेमोरी ऑब्लिटरेट हो गया, यानी सब कुछ भूल गया, वो पूरा वाइप आउट हो गया, एकदम सफा चट. ऑलराइट. नेटल के मीनिंग्स होते हैं, बॉटनी में भी होता है. देखिए, जैसे कि स्कटल भी मैंने कहा ना, बहुत मीनिंग्स हैं. तो स्करी वाला मीनिंग मैंने क्यों बताया, बिकॉज ये कॉमन इंग्लिश में यूज होता है. दूसरे जो मीनिंग्स हैं वो थोड़े जार्गन हो जाते हैं. जार्गन इज लाइक वर्ड स्पेसिफिक टू अ फील्ड रिलेटेड टू नेविगेशन, फलाना ढिमकाना. तो स्कटल नेविगेशन में भी यूज होता है. वैसे ही नेटल के भी बहुत मीनिंग्स होते हैं. एक बॉटनी से रिलेटेड होता है, प्लांट से रिलेटेड होता है. बट कॉमन इंग्लिश मीनिंग क्या होता है नेटल का? कॉमन इंग्लिश मीनिंग एज अ वर्ब इट मीन्स टू अनॉय, टू इरिटेट और टू प्रोवोक. किसी को भड़काना, परेशान करना. टू अनॉय, टू इरिटेट और टू प्रोवोक. कहते हैं ना भाई, जब स्पेशली आप जब बच्चे होते हैं, तो आपका जो भी यंगर सिबलिंग है, यंगर कजन होता है, जो आपसे छोटा रहे, ज्यादातर उसकी बातें आपको इरिटेटिंग लगती है. वो बार बार आपके पीछे पड़े कुछ बात करने के लिए, या मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो. देन यू आर लाइक ही और शी नेटल्स मी, तो अनॉयज मी, इरिटेट्स मी, या फिर प्रोवोक्स मी कि मैं गुस्सा आ जाऊं. ऑलराइट. बस आंसर बता दीजिए सो दैट वी कैन कॉल इट टुडे फॉर नाउ. Yeah, Astha, I got it that you thought that the answer was remiss and that was correct. आंसर क्या है यहाँ का? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द रेसिपी इज टू डैश आउट इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज को डैश करना फ्रॉम द सूप, हटाना, रिमूव करना. फेलियर टू डैश द ब्रॉथ. दोनों ब्लैंक्स में सिमिलर वर्ड आएगा, सेमीकोलोन है. फॉर फैट एंड बोन्ड बिट्स विल मेक फॉर अ बिटर सूप. अगर ब्रॉथ को डैश नहीं किया. ए ए भी सिमिलर है ना, स्किम एंड फिल्टर. यस. फिल्टर आउट इम्प्योरिटीज में इम्प्योरिटी हटा दिया. फेलियर टू फिल्टर द ब्रॉथ, यानी फेलियर टू स्किम द ब्रॉथ फॉर फैट एंड बोन बिट्स. अगर आप ब्रॉथ को स्किम करोगे तो फैट एंड बोन बिट्स हटा दोगे. अगर ये नहीं करते हो, स्किमिंग नहीं करते हो, तो बिटर हो जाएगा सूप. सिमिलर वर्ड्स ना. स्किमिंग में भी वही होता है कि आप अनवांटेड पार्ट हटा देते हो. फिल्टर में भी वही होता है, आप अनवांटेड पार्ट हटा देते हो. आई डिड नॉट इवन डिस्कस द ए ऑप्शंस बिकॉज आई अज्यूम कि मोस्टली आपको पता होगा, क्योंकि फिल्टर सबको पता है वाटर के टर्म्स में, स्किम सबको पता है मिल्क के टर्म्स में. स्किम्ड मिल्क होता है ना, जिससे फैट हटा दिया जाता है. नॉन फैट मिल्क को कहते हैं ना स्किम्ड मिल्क, फैट हटा दिया. ऑलराइट गाइस, अभी के लिए इतना ही रखते हैं. प्लीज रिवाइज ऑल द वर्ड्स. yesterday we had 11 p.m. सेशन. अच्छा, आज रात को 9 बजे प्लस क्लास है, वेयर वी आर डूइंग ग्रामर राइट नाउ. और कल टुमारो वी विल नॉट हैव अ यूट्यूब सेशन टुमारो. कल जितने भी होंगे अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस होंगे, और ऑफ कोर्स प्लस क्लास भी होगा, बिकॉज टुमारो इज वेंसडे नो. हाँ, टुमारो इज वेंसडे. सो टुमारो नो यूट्यूब सेशन. इट्स ऑल गोइंग टू बी
free special classes on Unacademy. Right? So before calling it a day, let me tell you about the subscription plans. We have the Plus and the Iconic plans for you. Plus में आपको मिलते हैं live classes, weekly tests, structured courses, unlimited access and study material. और Iconic में मिलता है everything that comes with Plus, plus उसके अलावा study planner, experts guidance, just analysis, personal guidance. These are the price points. Plus के price points हैं for 6 months it's 16,400, 18 months is 28,550 and 24 months is 32,800. You can use my code SharmaG, J-I, and get 10% off. If you're somebody who appeared in CAT in 2021 and you got 80 percentile or above, then you can again use the code SharmaG and get 30% off on any of the subscriptions. Iconic के price points हैं 25,800 for 6 months, 39,500 for 12 months and 59,999 for 24 months. Again, you can use the code SharmaG and get, like I said, 10% off or 30% off depending on whether you wrote CAT last year or not. Alright guys, so I'll see you tomorrow. Take care. Bye-bye.